Hello, good morning student. Today we discuss chapter 10 class 9 circle and exercise 10.4. Discuss some important question. So let's start now. Question number 1. Two circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. According to question, two circles हैं, रेडियस डिफरेंट हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. जो रेडियस हैं गिवन हैं, टू सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस इज आल्सो गिवन. देन वी फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन chord. So student, figure of this question is this type. Two circles intersect at point A and B. Center is O and O dash. Okay, join points OA, OB and OO dash. Okay, this type. Radius is 5 centimeter, 3 centimeter and distance between 4 centimeter. Distance between their center. Find the length of common chord AB. AB. Student, we discussed in previous videos and पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटर से किसी भी कोड पर जो परपेंडिकुलर, जो सेंटर से एक लाइन आती है परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्ट करता है उसको कोड को. सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्ट द कोड एंड बाइसेक्ट द कोड. तो यहाँ पर देखिए ये इसको बाइसेक्ट करेगा एम पॉइंट पर. सो वी फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम. देन ए एम प्लस बी एम इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज़ द कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स. ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड the area of triangle OAB. Use Heron's formula. So in triangle AOO dash, S semi perimeter 5 plus 4 plus 3 upon 2, 12 upon 2 equal to 6 centimeter. Area of circle, area of triangle. Student, triangle, area of triangle, area of triangle by Heron's formula. Heron's formula is S in bracket S square root में देखिए S minus A. S minus A means first side, S minus B second and S minus C. So 6 minus 5, 6 minus 4 and 6 minus 3. Then 6 into 1 into 2 into 3. Student, 6 2 ja 12, 12 3 ja 36 and square root of 36 is 6 centimeter square. So we find the area of the triangle OAO dash and find AM. So area of triangle, second formula is half into base into height equal to area and area is 6. Then half into base is OO dash 4 into height AM equal to 6, 2 2 ja 4, then AM equal to 6 upon 2, 3. Then common length of common chord AB equal to 2 multiply 3 equal to 6 centimeter.
So student, we find the length of common chord AB is 2 multiply AM, twice of AM is 6 centimeter. Clear? Any doubt? No? Okay student, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें. And next question is question number 3rd. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord. इंटरसेक्शन पॉइंट जो इक्वल कोड्स हैं उनके साथ एक इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, बनाएंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है स्टूडेंट. सो क्वेश्चन नंबर 3. A circle and a chord and two chords, equal chords AB and CD, two equal chords AB and CD. This is the center. Okay, A and B, C and D intersect point P, center is O, then students center is C and D point and center point is O. Perpendicular O on CD is OM and this is ON. Intersection point is P. Join OP. Okay. So according to question, find is angle OPM and OPN is equal. Clear student? So AB and CD is equal chord of the circle. Intersect at point P. Okay, so in triangle OPM and O and OPN, okay, OPM and OPN, angle OMP, angle OMP equal to angle ONP 90 degree each. OP equal to OP, common, and next part student, hypotenuse स्टूडेंट, ये हाइपोटेनस है, OP इज OP कॉमन जो हमने यहाँ पर शो किया है स्टूडेंट, एंड OM इक्वल टू OM इक्वल टू ON. रीजन इज इक्वल डिस्टेंस, equal chords are equal distance from the center. Equal chords are equal distance from the center. So OM equal to ON. Equal chords, equal distance
from the center. Okay, then triangle OPM, congruence triangle OPN by स्टूडेंट बताइए, by RHS, by condition is RHS, triangle, both triangle is congruence. Then angle OPM equal to angle OPN, proved CPCT. Okay student, clear now? So I hope that student क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.